Since it's given to you that three particles, 1, 2, and 3 are placed at the corners A, B, C of an equilateral triangle of side 1 meter, students. Find the distance of the center of mass from A they have asked you. Anyone? Yes, come on, Neha, Rizar, Anita, Rishabh, Valentino, Taksh, Vriti. Vriti, can you solve, Vriti? Vriti? I'm trying. Pio, doesn't matter, please. Vriti, you had sent me some text, Vriti. Vriti? हाँ sir. मुझे टाइम ही नहीं मिला, please. Day before yesterday, it was the whole day lectures. Yesterday also, I had the whole day lectures. I had it. Okay. Sir, it's regarding circular motion only. Okay, that doesn't matter, my dear. I'll look into it. Okay. Actually, I have more, but I sent you only one. Uh, There are 2, 3 more. which branch you are into, Vriti? Sir, I am in KVPY branch. So when you meet in that time, you can put forward. Okay. You can come forward. But when तब तक तो भूल भी जाऊंगी. I don't know when. Very. Hey. मुझे आंसर दो, 7th का आंसर दो. Anybody please, fast. Vriti, चलो. पीयूष से पहले आंसर दो जल्दी. Piyush laughing and enjoying. Yes, anybody is getting the answer, students, for the 7th one? Okay. Shall I solve it for you all, students? Students, you want me to solve it for you all? I know, why is it so? It's such an easy question given to you, students. There are 3 particles that are given to you. Sir, I know how to go about the question, but just Very one good, thing Neha. I'm not- Very good, Neha. Tell me how to go about with the question. चलो शुरुआत तो करो, बोलो. कैसे करोगे? So it was Pihu, not Neha. हाँ? पीहू, okay, sorry. पीहू, चलो बोलो बिंदास. You're a very good girl. Sir, but I'm stuck with one problem in the question. Isme we will take equilateral triangle and then from x-axis and from y-axis we will remove the, matlab we will find out the x COM and y COM and then we will get, but
So how do you get it? It's an equilateral triangle. All sides are equal to 1 meter. Since don't you think so? मैंने exactly identical मैंने ऐसा question किया है. And why can't you all get it, students? मुझे पता नहीं चल रहा है. हाँ, students. Anita, what about you? What are you doing? Akshat. हाँ. Izar. Neha. What are you doing, Taksh? Taksh, what are you doing? Taksh, Shubh. Can't you get the answers? Pranay, are you there in lectures? Shall I solve it for you all, students? Students, solve करूँ मैं? आया ना? Yes, sir. This is very, very bad. मुझे expect नहीं था कि तू कोई भी आंसर नहीं दे सकेगा. Students, if the 3 masses are given to you of 1 kilogram, 2 kilogram, and 3 kilogram at the 3 corners of an equilateral triangle. Students, you check out this. Exactly identical question मैंने किया है तुम लोगों के साथ में. I don't know what it. Why can't you get it? I Yes, want so to we have find to find the altitude of C to O perpendicular, and then from it Valentina has we already take. completed. See, Valentina already completed. Yeah. This is, I really feel like coming into the phone, Neha, coming out of your desktop and punching onto your face and coming back over here and taking lectures. So what I did? सर वो पीहू है. ये लोगों Sir. ये लोगों क्यों change हो रहा है? These girls are really going to make crazy. Okay. तो देखो students, how to go about this? Students, A को तुमने रखा हुआ है. From A पूछा है ना? Find the distance of center of mass from A. तो देखो, I'll try to go for the axis, students. ये तुम्हारा vertical axis हो जाएगा. ये तुम्हारा horizontal axis हो गया, students. है ना? मुझे center of mass with respect to A चाहिए, students. ये x axis और ये y axis. चलो इसके भी coordinates लेना शुरू कर दो, students. A के coordinates क्या होगा? हम A को origin पे लेते हैं, तो students x1 y1 will be the coordinates. और इसको मैं 0,0 ले सकता हूँ, क्यों नहीं? ये क्या होगा? x2 y2, students. तो इसके coordinates क्या होंगे? हाँ students, ये क्या है? 1 x2, 0. x2, 1, 0. 1, हाँ 0 होगा. एब्सोल्युटली करेक्ट. ओके. और फिर यहाँ पे x3, y3 हो जाएगा. तो x3 का मतलब क्या हुआ? यहाँ से, क्योंकि ये पॉइंट यहाँ पे, तो एक पॉइंट ये होगा x3, ये x3 और ये y3. तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? ये डिस्टेंस कितना होगा? इसका आधा. So 0.5. 0.5, √3. हाँ, और ये क्या होगा? ऑपोजिट टू 60 डिग्री. ये ऑल्टीट्यूड बन जाएगा. तो कहने से साइड ऑपोजिट 60 डिग्री इज √3/2 टाइम्स. स्टूडेंट्स, ये 9th और 10th में पढ़ा हुआ है, 8th में भी पढ़ा है. Side opposite to 60 degree of an equilateral triangle is √3/2 times the hypotenuse. Hypotenuse is 1. ये 90 डिग्री है. तो कहने से ये √3/2 हो जाएगा. फ्रेंड्स, क्या ये क्लियर हुआ? Yes, Sir, sir. √3 by 2, how it came? My dear, this is 8th standard math. Side opposite to 60 degree is √3/2 times the hypotenuse. Now this is PU. You only are saying it now. Sorry, sir. Okay, sir. ये डीपी ने मुझे पूरा कंफ्यूज करा. अभी मैं चिल्लाने वाला था नेहा को. पीओ, इक्विलैटरल ट्रायंगल का ये प्रॉपर्टी है. 30, 60, 90 थ्योरम तुमने किया है. पहली तरीके Yes, से तुम स्कूल लेवल के हिसाब से जाओ तो 30, 60, 90 थ्योरम में तुम लोगों ने किया है. साइड ऑपोजिट 30 डिग्रीज इज हाफ द हाइपोटेन्यूज. साइड ऑपोजिट 60 डिग्रीज √3/2 टाइम्स द हाइपोटेन्यूज. फिर 45, 90 में 45 डिग्रीज का कॉन्ग्रुएंट 1, 1 √2. दूसरी तरीके से तुम्हें करना है, तुम इसके कंपोनेंट निकाल सकते हो 1 के. फिर अगर 1 के कंपोनेंट निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा?
ये हो जाएगा 1 cos थीटा, ये हो जाएगा 1 sin थीटा, 1 sin थीटा यानी 1 sin 60 एंड sin 60 is √3/2, तो आ गया ना √3/2। ओके सर, ओके। साइड का कंपोनेंट निकाल दो ना, वर्टिकल कंपोनेंट क्या आएगा 1 sin थीटा, हो गया हाँ, यस सर, है ना। अब देखो वेक्टर्स में अंडरस्टूड हो गया, लेकिन वही चीज मैंने अगर 10th लेवल या 9th लेवल 8th लेवल का बताया तो नहीं, यानी पीओ को समझ में आ रहा है। पीओ यस सर। क्या कि 9th में जो कुछ 9th में पढ़ा है वो तुम 11th में भूल रहे हो, आया ना, है ना। यस सर। तो वही तुम अभी 11th में वो कर रहे हो, 11th के बिगनिंग में कर रहे हो, तो वो 12th के एंड में 2 साल के बाद भूल जाओगे, तो एग्जाम्स होगी 12th की, तो ये भूल जाओगे कि नहीं भूलोगे। नहीं सर। क्यों, जब 9th का किया है तो विद इन 2 years, आफ्टर 2 years यू आर फॉरगेटिंग इट। यही यही चीज होती है पढ़ाई के अंदर। These are the things which are there, students. इसके ऊपर अगर कोई स्टूडेंट्स अच्छी तरह से कंसंट्रेट करे ना, स्टूडेंट्स बैकलॉग को कभी भी भूले नहीं। स्टूडेंट्स, सच स्टूडेंट्स आर ऑलवेज सक्सीडिंग इन एग्जाम्स एंड दे स्कोर बेटर स्टूडेंट्स। Okay, now let's come back. So you've got the coordinates. Now what exactly the formula for XUM? XUM का formula क्या होगा? So it's M1 x1 plus M2 x2 plus M3 x3 upon M1 plus M2 plus M3. Now see, I've given masses. M1 is 1, M2 is 2, and M3 is 3. You can substitute the masses. तो नीचे तो 6 आएगा। Solve this. x1 डालो, फिर x2 डालो, फिर x3 डालो। YCUM is what? M1 y1 plus M2 y2 plus M3 y3 upon M1 plus M2 plus M3. Friends, can you get the answer for this? अभी ये solve करो। Sir, 3.5/6 XUM. पहला वाला कितना है? 3.5. 3.5 upon 6. 3.5 upon 6. Yes, sir. Valentino says 2/3. And YCUM क्या है तुम्हारा? 7 by 12. YCUM कितना है? सर एक्सीएम 2.5/6 है। 2.5/6। अभी ना Sir, and YCUM √3/4. ये सॉल्व करना पड़ेगा। M1 x1 ये 0 हो जाएगा स्टूडेंट्स, प्लस M2 x2 ये 2 हो रहेगा, प्लस M3 x3, सो 5 3 15, ये 1.5 होगा। तो स्टूडेंट्स 0 + 2 + 1.5 यानी 3.5/6 होगा स्टूडेंट्स। इसको मैं सॉल्व करूंगा तो 3 से जाएगा। हाँ स्टूडेंट्स, कि नहीं जाएगा? नहीं जाएगा। नहीं जाएगा। अगर तो ये 3.5/6 ही रहेगा। एग्री? Yes, sir. You can get it in form of decibels. That's the only thing you can consider. You getting it? Now can you go for YCUM? M1 y1 ये भी 0 जाएगा, प्लस M2 y2 ये भी 0 जाएगा, प्लस M3 y3. So this becomes now is 3√3/2. Agreed? Yes, sir. ये हो जाएगा 3√3/2. 3 2 जा 6, तो ये √3/4 हो जाएगा। क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes sir. All the students. So now I've got the coordinates. What are the coordinates, students? The coordinates of center of mass from A. Okay, having coordinates is what? 3.5. So XUM and YCUM. I've got it as how much? 3.5/6, comma √3/4. Agreed? Yes, Yes sir. sir.
ना पूछा क्या उन्होंने, क्या ये पूछा है? पूछा ये नहीं है, सर, फाइंड द डिस्टेंस डिस्टेंस, निकालना है, एफ हाँ टी फाइंड द स्क्वायर। डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास फ्रॉम ए। अभी देखो ये अगर तुम्हारे, देखो अभी इफ आई हैव टू गो फॉर इट 3.5 by 6, आई गेट Yes, 6 sir. 7s are 42, 6 6 are 36, मींस अप्रोक्सीमेटली 0.6 से कम है एक्स एक्स एक्सिस का, यानी समवेयर यहाँ पे होगा, ये तुम्हारा लाइन है, ये समवेयर यहाँ पे होगा, और y एक्सिस इज 1.7 डिवाइड बाय 4, सो 4 4 are 16, 0.4 के आसपास होगा, यानी यहाँ से ये कितना है, √3, तो समवेयर ओवर हियर विल बी द सेंटर ऑफ मास। ये डिस्टेंस पूछा है तुम्हें स्टूडेंट्स, ये डिस्टेंस पूछा है, तो ये x1 y1 तुम्हें पता है, कैन आई टेक दिस एज x2 y2? Yes, sir. नाउ कैन आई फाइंड आउट द डिस्टेंस फार्मूला स्टूडेंट्स? आई वांट टू फाइंड द डिस्टेंस, इसको मैं ले लेता हूँ g, बिकॉज इट कैन बी द सेंट्रॉइड आई कैन कंसीडर, या o में ले लेता हूँ, डजंट मैटर, चलो मैं o ले लेता हूँ, डजंट मैटर। व्हाट एग्जैक्टली लेंथ AO स्टूडेंट्स, व्हाट एग्जैक्टली फार्मूला फॉर लेंथ AO क्या हो जाएगा? लेंथ AO इज व्हाट? एनीबॉडी कैन टेल मी द फार्मूला फॉर लेंथ AO है? अंडर रूट जो यस, सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट्स है वो दोनों का स्क्वायर ही रहेगा, क्योंकि जीरो वाले on the whole square, यानी XCOM माइनस x1 द होल स्क्वायर, चलो इसको मैं XCOM ही लेता हूँ, और ये YCOM प्लस YCOM माइनस y1 द होल स्क्वायर। क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? Yes, x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। अभी क्लियर हुआ स्टूडेंट्स सबको? yes, डिस्टेंस, कभी इसको मैं सबट्रैक्ट करूंगा तो क्या होगा, 3.5 माइनस 0, व्हाट एग्जैक्टली द आंसर फॉर दिस विल बी? सो दिस विल बी sir. सिंपली रूट ऑफ 3.5 by 6 the whole square plus √3 by 4 the whole square। क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट सबको? यस हाँ सर। सर। Is it clear to all of you all? Yes, यस सर। Now can you solve and get the answer accordingly? This is now mathematical way of approach. sir. It is coming root of 1/5. Root of 1 by 5. Huh? Yes, sir. So 1 upon √5. Agreed? Yes, yes, So √5 upon 5. Rationalize. है ना? 1 upon √5 को कैसे लिखेगा? √5 yes, upon 5 sir. लिखेगा। और √5 की वैल्यू कितनी है? 2.2। मैंने बताया कि नहीं बताया? यस सर। हाँ, ये बहुत पहले बता दिया था स्टूडेंट्स, रूट्स की वैल्यू। तो √5 की वैल्यू में 2.2 लेता हूँ, 2.2 by 5। व्हाट इज 2.2 by 5? 0.5 4s are 20, 4 4, 0.44 is the answer. Agreed? Yes, sir. But cross check it again. वही आंसर आ रहा है कि दूसरा आंसर आ रहा है? फ्रेंड्स क्या क्लियर हुआ? इज इट क्लियर? यस सर। ओके, कैन आई इरेज दिस? इसको इरेज करो स्टूडेंट्स। और दूसरी बात स्टूडेंट्स देखो, तुम्हारे ये 1 किलोग्राम है, ये 2 किलोग्राम है, ये 3 किलोग्राम। आई गेटिंग इट? 1 और 2 का सेंटर ऑफ मास 0.5 से ज्यादा आएगा, and 3 and this का center of mass will be towards 3, will slightly go towards 3. Can I erase it, students? Erase करूँ मैं इसको अभी? हाँ स्टूडेंट्स,
Yes, sir. Neha, clear? Very good, Neha. Yes, sir. अच्छा, Sir, it was me. I will change the DP only. Wait. ये क्या हो रहा है? इज़हार समझ में आया इज़हार? इज़हार, are you there? Okay. Now students will be going for the concept of locating of center of mass with respect to area, students, okay? With respect to your concept of your area and with respect to your mass, students, okay? Students, if in case, if I happen to go for center of mass, listen carefully, students, this is one more mathematical relation, and then we'll go for motion of center of mass. I didn't get you, Izar. What exactly that means? Sir, new topic, na? Pardon? क्या बोल रहे हो? Sir, new topic कर रहे हैं ना अभी? ये टॉपिक नहीं, सेंटर ऑफ मास का, लेकिन आगे कंटिन्यूएशन हो रहा है. हाँ भाई. No. So center of mass of students, 2D object students, okay? Center of mass of 2D objects considering mass and area, okay? Considering in mass and area, students. And this is simply we consider for laminar objects. Which objects? These objects which has a broad surface. Objects which has a broad surface we consider a laminar surface, students. We are trying to go for center of mass for such kind of object, students, okay? Now, when you go for these object, students, you can simply consider, first we take it in terms of center of mass with respect to area, students. Now, for example, agar suppose मैंने तुम्हें please pay attention, students. Let us go with respect to mass and with respect to area part of it, students. Okay. Let me first I consider with respect to your mass. Okay. One question itself only, but different way. Students, यहाँ पे देखो, मैंने एक square block दिया है. Okay, I'm giving you a square block. This square block, students, I've divided into 4 equal halves. Listen carefully. Over here also, students have taken a square block and I've divided this square block into 4 equal halves. Agreed? Now, what exactly I've done it over here is, in the first case, students, I've tried to see to it that when I'm speaking about masses, students, what exactly I'm trying to go for? I'm trying to go for area of each block to be remain constant, students. यानी अगर मैंने ये total 2 meter दिया है, students, so how much is each of them? 1 meter, है ना? So this is Yes, sir. entirely equal area I'll consider will be, yes, the area is same. देखिए मैंने क्या किया है, all this particular, the entire square block is non-uniform, students. The mass is non-uniformly distributed. Is it a laminar object? Is it a laminar object? तुम बोलोगे हाँ सर, it's a laminar object. Is it a two-dimensional object? हाँ सर, अगर मैं इसको place करूँ x axis और y axis पे, तो ये two-dimensional object में हो गया. हाँ सर, two-dimensional object में हो गया. ये x axis हुआ और ये y axis हुआ. Agreed? If I happen to go for considering its mass, what exactly I've seen to it that the area of each block I've kept it constant. But is the mass uniformly distributed? No. So mass is non-uniformly
distributed. Now, suppose if I happen to go for, I want to find out the center of mass of such a system. I suppose मैंने ये first block दिया है, ये second block दिया है, ये third block दिया है, ये fourth block दिया है students. ये 0,0 इसके coordinates है. इसका mass m1 दिया है, इसका mass m2 दिया है, इसका mass m3 दिया है students और इसका mass m4 दिया है. Students, अभी मैंने पूछा, can you look at the center of mass for such a lamina? समझ में आ रहा है students क्या किया मैंने? एरिया सब में सेम है, पूरा एक पीस है, पूरा एक पीस है स्टूडेंट्स, लेकिन उसमें 4 ब्लॉक्स है, चारों का मास अलग है स्टूडेंट्स. आई वांट टू फाइंड आउट सेंटर ऑफ मास ऑफ इट, ऑफ द एंटायर सिस्टम. तो क्या करोगे तुम? तो तुम तुरंत बोलोगे सर सबका मास अलग है, तो क्यों ना मैं m1 का पहले सेंटर ऑफ मास निकालूं, तो उसका तो सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा, है ना स्टूडेंट्स. ये जो डिस्टेंस हो जाएगा वो r1 हो जाएगा. अरे हाँ सर, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, तो उसका डिस्टेंस तो r2 हो जाएगा. इसका डिस्टेंस r3 है, तो ये हो जाएगा. इसका डिस्टेंस r4 है, तो ये होगा. इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? क्या ये क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. यानी स्टूडेंट्स व्हाट डिड आई डू? मैंने किया क्या है? स्पेसिफिकली आपने वो निकाल लिया हर एक ब्लॉक के लिए सेंटर ऑफ मास. कैन यू टेल मी लाउडर? इज़ार? सर हर एक ब्लॉक के लिए स्पेसिफिकली सेंटर ऑफ मास निकाल लिया. हाँ, यानी स्टूडेंट्स ये कौन सा क्वेश्चन हो गया मालूम है? ये वाला क्वेश्चन हो गया कि मैंने अगर तुम्हें कोऑर्डिनेट एक्सिस दिए है और मैंने एक मास यहाँ पे दिया है, दूसरा मास यहाँ पे दिया, तीसरा मास यहाँ पे दिया, चौथा मास दिया, और मैंने उसका सेंटर ऑफ मास पूछा है ना. सबसे पहला वाला कंसेप्ट याद आ रहा है? हाँ स्टूडेंट्स, तो व्हाट एग्जैक्टली माय सेंटर ऑफ मास? हाँ स्टूडेंट्स, तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास यानी RCOM हो जाएगा. Yes, sir. M1 R1. वेल, तो व्हाट एग्जैक्टली आई गेट इट? RCOM का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सर ये हो जाएगा M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस M3 R3. कुछ समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? M4 Yes, R4 sir. अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? Yes, sir. हाँ स्टूडेंट्स. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अभी इसी के अंदर मैंने ये वापस ले रहा हूँ मास के हिसाब से स्टूडेंट्स, मास के हिसाब से ले रहा हूँ स्टूडेंट्स. अभी वापस मैंने एक स्क्वायर ब्लॉक दे दिया है. अभी यहाँ पे यूनिफॉर्म मास है स्टूडेंट्स. यहाँ पे यूनिफॉर्म मास है. ये तुम्हारे कोऑर्डिनेट्स हो गए स्टूडेंट्स. एग्रीड? 4 ब्लॉक से वापस 4 ब्लॉक है स्टूडेंट्स. एग्रीड? Yes, sir. लेकिन इसमें से मैंने ये वाला ब्लॉक निकाल दिया है. तो क्वेश्चन मेरा ये है स्टूडेंट्स, अ स्क्वायर लैमिना इज गिवन टू यू ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर. ओके, if I remove one of the square block, what is the center of mass of the remaining portion? Remaining portion यानी ये हो जाएगा, आया ना? Yes, sir. यानी it will be an L-shaped structure. Yes. तो मुझे Yes, इसका sir. center of mass क्या होगा? Can you tell me what is the center of mass of such a body? तो तुम क्या करोगे? Sir, M1 R1 plus M2 R2 M2 R2 plus plus M3 M3 R. R3 by M1 plus M2 plus M3. Since I've reduced it from the entire. Let us say the entire mass students, मैं इसको मैं M1 ले रहा हूँ students. ये पूरे मास को मैंने पहले क्या लिया? M1 लिया स्टूडेंट्स. Sir, और इस- M1 Sir, R1 minus M1 by M2 one. R2. अरे इसका सेंटर ऑफ मास x1 y1 होगा. हाँ स्टूडेंट्स, सेंटर ऑफ द लैमिना. Yes. Yes, sir. एग्रीड? अभी जो रिमेनिंग पोर्शन है इसका पूरा मास मैं M2 ले रहा हूँ. अगर मैंने मास दे दिया M2 ले रहा हूँ. आई गेटिंग इट? Yes, sir.
So can I consider its coordinates also x2, y2? Aya na? Yes, sir. So now can I say my xum and ycum will be how much? What is my xum? m1 x1 minus m2 x2 upon m1 minus m2. Friends, getting it or not? Yes, Yes, sir. sir. Xum will be what? m1 y1 minus m2 y2 upon m1 minus m2. क्या ये clear हुआ students? Yes, sir. Yes. Students, that means I can go for the non-uniform mass, I can go for uniform mass, I can remove the mass. अभी देखो ध्यान से देखना अभी स्टूडेंट्स, अभी ये और एक क्वेश्चन, मैंने क्या किया, ये मास को रिमूव किया और ये मास इसके ऊपर ऐड कर दिया। स्टूडेंट्स, मैंने निकाल के फेंक नहीं दिया, Yes. ऐसे भी क्वेश्चन पूछेंगे। मैंने ये मास को निकाल के इसके ऊपर प्लेस कर दिया स्टूडेंट्स। तो क्या होगा? अभी देखो, तो तुम ये कर सकते हो, तो तुम तो अभी जो इसका पहले वाला फॉर्मूला बोला ना स्टूडेंट्स, यू कैन टेक दिस एज पीस 1, यू कैन टेक दिस एज पीस 2, यू कैन टेक दिस एज पीस 3। तो कहने से इसके कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे, आया ना? Yes. Yes, sir. इसका मास एम ही रहेगा ना, एक ही पीस है ना। हाँ स्टूडेंट्स, Yes, sir. प्लीज एवरीबॉडी, आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग? Vruti, are you Yes. understanding? Okay, Neha, what about you? Yes, sir. Okay, now Piyu is answering. Piyu, what about you? Izar, Yes. Manomai, Chop, Daksh, Valentino? Yes, sir. Sir, here Yes, why sir. you took only two coordinates? मतलब only m1 and m2. मतलब वो आपने कैसे किया वो नहीं समझा। नहीं, मैंने इसके ऊपर ओवरलैप कर दिया, तो इसका मास m है, इसका भी मास m है, लेकिन यहाँ पे मास क्या हो जाएगा? 2m हो जाएगा। Are you getting it? इसका मास क्या हो जाएगा? 2m हो जाएगा, क्योंकि ओवरलैप कर लिया है। और इसी को अगर मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस में देखूं स्टूडेंट्स, तो देखो ना, ये मेरा कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया, ये हुआ मेरा कोऑर्डिनेट एक्सिस। कैन आई फाइंड आउट r1 का पोजीशन, r2 का पोजीशन एंड r3 का पोजीशन? क्या ये क्लियर हुआ? इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? Yes, sir. सर हाँ, ये कौन है? हाँ बोलो। सर आपको XCOM और YCOM कैसे मिला? किसके लिए बात कर रहे हो तुम? किसके लिए बात कर रहे हो? So for that L-shaped body. अच्छा, पहले वाले। हाँ सर। हाँ, तो पहले वाले का मैंने पूरा एक पीस लिया है, उसका मैंने x1 y1 ढूंढा है ना, ये सेंटर है, Yes sir. पूरे का बॉडी का मास m है, x1 y1 तुम्हें पता है, उसमें से फिर मैंने ये पार्ट निकाल दिया था। Are you getting it? अच्छा okay. Okay. So now हाँ I can get the coordinates. I can get the coordinates of the other one, axiom, yxiom for the next one, yes sir. and Yes. then I can find out the axiom and yxiom. Is this clear, students? Yes, sir. Now, if I happen to go with respect to area, can I erase this, students? इसको मैं erase कर दूं, students? So just Sir, a wait. Okay. Oh, you have changed the DP, Neha.
Can I erase now? Yes. Yes, sir. Since the same question now, suppose if I happen to go with respect to area, so how do I go about with area? Students, I want to find out center of mass of this particular two-dimensional laminar, students. So what you'll do? ये तुम्हारा फॉर्मूला RCOM है ना? In terms of mass, can I find out area of this as A1, area of second piece as A2, area of third piece as A3, and area of fourth piece as A4, R1, R2, R3, R4. आ गया students? Students? Yes. Students, if I want to find out Sir, center of area mass, wise, no? pardon? Area wise. Yeah, with respect to area, I'm going for this is with respect to mass. Now this is with respect to area. Is that? See, how is the mass distributed throughout the surface? Yes. हाँ सर Should I समझा go for समझा. should I go for lambda, students? Lambda का मतलब क्या हुआ? Mass per unit length. Students, sigma का मतलब क्या हुआ? Mass per unit area. और rho का मतलब क्या हुआ? Mass per unit volume. ये मैं तुम्हें बता चुका हूँ, students. अभी ध्यान से सुनना. Everybody listen. What makes meter error in terms of area? चलो हम यही फॉर्मूला लेते हैं, students. फॉर्मूला ये लेता हूँ मैं. अगर मैंने ये फॉर्मूला लिया RCM is m1 r1 plus m2 r2 upon what is density over here, students? अगर मैं लेता हूँ यहाँ पे सिग्मा, तो सिग्मा कैन बी रिटन मास पर यूनिट एरिया, है ना? Yes, Total sir. mass square upon area. Can I say this sigma is a ratio of mass per unit which gets divided into what? 4 parts. So can I write this as m1 by a1, m2 by a2? The ratio will remain constant. आया ना? Yes. Yes, sir. अब मैं क्या कर रहा हूँ? मैं क्या कर रहा हूँ? सर आपने m1 को सब्स्टिट्यूट कर दिया है सिग्मा इंटू a1. यानी फॉर्मूला यही है. मैंने क्या किया है? m1 के जगह पे मैंने क्या सब्स्टिट्यूट किया है? सर सिग्मा इंटू a1 इंटू r1 प्लस m2 को क्या सब्स्टिट्यूट किया है? सिग्मा Sigma इंटू into A2. सिग्मा को मैंने बाहर ले लिया. सिग्मा को मैंने बाहर ले लिया. तो a1 r1, a2 r2, a3 r3 प्लस a4 r4. डिनोमिनेटर में भी क्या होगा? सर यहाँ पे भी मास को कैसे लिखोगे? सिग्मा इंटू. Agreed? So can I remove sigma outside? यहाँ पे a1 plus a2 plus a3 plus a4 sigma will get cancelled. Am I getting my answer for center of mass for this? Yes, sir. समझ में आ So, रहा so है? you're writing in terms of R, no? My dear, this is also in terms of RCM only. Position, हाँ. location, position of mass. हाँ. That is which in terms of axiom. This is in terms of RCM. That means I can get an axiom and YCM. What is R1? So what is R1 bar? What is R1 bar? x1 I cap plus y1 j cap. ये R1 होगा. तो अगर मैं x1 a1 को x1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो और a1 को y1 से, तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे इससे xum मिलेगा, इससे ycum मिलेगा. आया ना? ये पोजीशन वेक्टर है. Yes, sir. Yes, sir. वेक्टर्स मत भूलो. वेक्टर्स भूल गए तो पूरा फिजिक्स नहीं आएगा. स्टूडेंट्स आई एम टेलिंग यू वेरी क्लियरली. ये मैंने RCOM दिया है. अगर मैंने यही क्वेश्चन पूछा फाइंड आउट एक्सियोम एंड वाईसीओएम, स्टूडेंट्स एक्सियोम तो इजीली फाइंड आउट कर सकते हो. तुम RCOM निकालोगे ना, किसने बोला नहीं? तो यहाँ पे तुम्हारा x और y में आंसर आएगा. xy. फिर x टर्म्स को और y टर्म्स को सेपरेट कर दो, खत्म हो गई बात. एक हो जाएगा एक्सियोम, दूसरा हो जाएगा वाईसीओएम. क्या ये क्लियर हुआ सबको? Yes, sir. Yes. Please, all the students inside the group,
Yes, sir. Yes, sir. Fine. Prati, are you getting it? You're not replying. Valentino. Prati, are you there? Anaita, what about you, Anaita? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Arif, Aryan, Ayush, Christy, Kushali, what about you, Kushali? Yes, sir. Manomai, what about you? Oj, Pratham, Rishabh, Rushika never replies. Pranay, Pratham, Rishabh, Rushika. They never ever reply. Sir, Acha, who says Pranay? You reply, Pratham, you reply? no, sir, Rishabh. Acha, Rishabh. Okay, fine. Okay. वही अगर मुझे एरिया को सेपरेट करना तो आई कैन गो फॉर इट. आई कैन रिमूव द एरिया पार्ट आल्सो. अगर वही सब्ट्रैक्शन में मैंने लिखा था ना, इसके पहले मैंने सब्ट्रैक्शन में लिखा था m1 x1 माइनस m2 x2 अपॉन, तो m1 की जगह पे क्या लिखोगे? सिग्मा इंटू a1, है ना? तो तुम्हारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? RCM can also be written in terms of, if I want to remove the masses, then sorry, XUM in terms of, so a1 x1 minus a2 x2 upon what? a1 minus a2. ये XUM हो जाएगा. ये किसके लिए स्टूडेंट्स? अगर मैं एरिया निकालता हूँ, अगर मैंने कोई कुछ पीस दे दिया तो भाई इसका पूरा एरिया a1 है, उसमें से मैंने ये एक पीस निकाल दिया. आई गेटिंग इट? तो जो निकाला हुआ पीस है उसका एरिया a2 है, उसका x2 तुम्हें पता है. तो कैन यू फाइंड आउट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिमेनिंग? व्हाई नॉट? समझ में आ रहा है तुम्हें? हाँ स्टूडेंट्स, वंस sir. अगेन Yes, Yes, sir. yes, ये sir. देखो, ये सोचो कि मैंने पूरा एरिया दे दिया स्टूडेंट्स, ये पूरा एरिया मैंने दे दिया और ये पूरे एरिया को मैंने ले लिया है a1. इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? x1 y1 हो गए, आया ना? सेंटर ही आएगा ना अगर यूनिफॉर्म मास है. एग्रीड? Yes, sir. Yes, ओके. बट लेकिन सपोज अगर मैंने ये पोर्शन निकाल दिया a2, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? x2 y2, है ना? तो Yes, बाकी sir. का लेफ्ट ओवर का सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे तुम्हें एक्सयूएम क्या मिलेगा, वाईसीएम क्या मिलेगा? फॉर्मूला क्या होगा सर? a1 x1 माइनस a2 x2. एग्रीड? yes, Yes, sir. रिमेनिंग पोर्शन का अपॉन क्या होगा? A1 A1 minus minus A2. A2. माइनस a2. समझ में आ रहा है? अगर वही मैं पूरा मास के हिसाब से लेता तो ये तुम्हारा मास ही है. ये सपोज मैंने पूरा मास ले लिया, उसमें से निकाल दिया, और मास को कैसे लिखोगे सर? मास को मैं सिग्मा इंटू एरिया ले लूंगा, हो गया. तो मैं a1 में, तो नीचे क्या आ जाएगा? a1 माइनस a2. वाईसीएम क्या होगा सर? a1 y1 माइनस a2 y2 अपॉन a1 माइनस a2. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, please copy this down. Okay, I'm giving you some time students. Okay.
So your mic is off. Sir, you are on mute. Sir, Oh, sorry. Since is the question clear? Now it's fine. sir, Can you you hear me? weren't audible when Sir, you were you Is it were clear? explaining to yourself only. What is this? You are laughing onto me. This is something I never expected from my students. No students does like that. It's only one you only do it. You always laugh onto teacher. No, sir. I was just telling you. You just laugh onto teacher. That is not, it's good. It's good. If it makes you feel happy, it makes you feel comfortable, I have no problem. No, it's not like that. Doesn't matter. Students, let her laugh, okay? Students, the first question is I've given you a plain lamina. Students, it's a lamina, okay? Think as if it's a 5 rupee coin or a 2 rupee coin. Students, 2 rupee coin and it's of uniform mass distributed throughout its lamina surface. Students, radius is A. Okay, the radius of this circular plate is A, students. If in case if this part is cut, the shaded part is cut, students. Okay, if this part is cut, the shaded part is cut, students. Then what exactly is the center of mass of the remaining portion, students? Okay. Likewise, over here, this was an entire semicircular plate was given to you, students. Semicircular plate was given to you. Okay. उसमें से मैंने ये part को cut कर दिया, students. This part I've cut it. Okay, shaded part I've cut it. So I'm getting an annular plate. Annular, thin, uniform plate, students. I want to find out center of mass of the remaining portion. Okay. The inner radius is R1, outer radius is R2. This is center O, this is y-axis, this is x-axis, this is y-axis. Are the two questions clear to all of you? yes, sir. So let's see. Now, Pio, can you laugh onto me again? I will be much more happy. Carry on. Yes, anybody?
No, sure. Students, can I solve it for you all? Students? Students, did we do this question? Yes, sir. उसके लिए मैंने कौन सा मेथड यूज किया था स्टूडेंट्स? Sir, by integration. पर इंटीग्रेशन का मेथड किया था मैंने, एक इनफाइनाइटेबल एलिमेंट लिया था स्टूडेंट्स, जिसका थिकनेस dr लिया था और वो एलिमेंट को डिस्टेंस r पे रखा हुआ था। कुछ याद आ Yes, रहा है? sir. एग्रीड। और उसका मैंने YCM लिया था इन टर्म्स ऑफ व्हाट 2r by 5 वी कंसीडर YCM, और फिर इनटू dr ले लिया था और फिर हमने उसको इंटीग्रेट किया था। सिग्मा इज इक्वल टू मास पर यूनिट एरिया लेके। स्टूडेंट्स बहुत ध्यान देना प्लीज। और उस टाइम पे मैंने बोला था आई कैन ऑल्सो डू द सेम क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू एरिया। लेट मी गो फॉर दिस क्वेश्चन फर्स्ट। स्टूडेंट्स मैं ये एक्सप्लेन करता हूँ, तुम्हें ये एक्सप्लेनेशन फिर मिल जाएगा। लेट अस गो फॉर दिस फर्स्ट। अभी मैं इसको कैसे सॉल्व करता हूँ स्टूडेंट्स? आई एम गोइंग विद रिस्पेक्ट टू योर एरिया पार्ट ऑफ इट। ओके, दिस इज एन annular thin uniform ring students. I want to find out center of mass। यानी पूरा एक सेमी सर्कुलर प्लेट था स्टूडेंट्स, ये half 2 रुपी कॉइन, उसमें से मैंने ये सेंट्रल पोर्शन को निकाल दिया है, तो अभी एक एंडुलर रिंग बन गया स्टूडेंट्स। आई वांट टू फाइंड आउट सेंटर ऑफ मास ऑफ दैट। तो सबसे पहले जब तुम देखोगे ना स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, तो डू यू हैव टू डिफरेंट एरियाज ओवर हियर? यस सर, यू हैव टू एरियाज। आर यू गेटिंग इट? In the first case, if you see over here, you have the first area. If I happen to consider, let me take this as इसको मैं R1 लेता हूँ स्टूडेंट्स और इसको मैं R2 लेता हूँ। Why? क्योंकि तुम्हारे दिमाग में A1 x1 minus A2 x2 बैठा हुआ है ना, है ना? फॉर्मूला में Yes, sir. A1 Yes. x1 minus A2 वो ठुसा हुआ है, यानी उसका मतलब हमें ग्रेटर में से छोटा निकालना है। ये भी ध्यान में रखना। देखो मैंने जान, अगर मैं यहाँ पे R1 ले लूँ या R2 ले लूँ, तुम कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन वो भी कंफ्यूजन तुम्हें समझना जरूरी है। तो तुम्हारा फॉर्मूला, अगर मैंने इसको R2 ले लिया, इसको R1 ले लिया, तो तुम्हारा फॉर्मूला अभी क्या होगा मालूम है? A2 x2 minus A1 x1। लेकिन अगर मैं वो बोल देता तो भी बोलेगे सर आपने तो फॉर्मूला A1 x1 minus A2 x2 दिया था। स्टूडेंट्स ये सब कुछ समझना होता है when you are learning it in the learning process। तुरंत मैंने चेंज कर दिया, लेकिन अभी now I'm trying to keep it things uniform। मैंने इसको R1 ले रहा हूँ स्टूडेंट्स और इसको मैं R2 ले रहा हूँ। चलो, now can you give me students what is the area of the first annular ring? We'll say sir pi R1 square by 2। क्या ये क्लियर हुआ? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Everyone please, everyone go on answering it। इसके कोऑर्डिनेट्स मुझे बता सकते हो? x1 y1। तो तुम बोलोगे सर ये पूरा A1 यानी ये पूरा आ गया। इसके कोऑर्डिनेट्स यानी कहाँ पे होंगे सर? ये जो सेमी सर्कुलर प्लेट, उसका कोऑर्डिनेट किस तरफ होगा सर? इसका कोऑर्डिनेट तो ये प्लेट है। हेलो, ये प्लेट है, ये रिंग नहीं है, ये प्लेट है। तो मुझे बताओ इसका सेंटर ऑफ मास विल बी अ वैल्यू ग्रेटर देन r/2 और लेस देन r/2 और इक्वल टू r/2? Greater than R/2. Louder. So greater than R/2. Absolutely wrong. This is what the problem is with your studies is। Okay, less than R/2. अभी चेंज करोगे स्टूडेंट्स। ये सेमी सर्कुलर प्लेट है, इट्स नॉट अ रिंग। मास इज मोर डिस्ट्रीब्यूटेड बिलो। समझ में आ रहा है? ये सब कुछ बताया हुआ है, सब कुछ सिखाया हुआ है, कुछ नया नहीं सिखा रहा हूं मैं। तो स्टूडेंट्स इसका तुम्हें एक्ससीएम और वाईसीएम क्या मिलेगा? तो बोले सर देयर इज नो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अलोंग द एक्स एक्सिस, तो एक्ससीएम तो 0 होगा। इसका वाईसीएम विल बी अलोंग द वाई एक्सिस, और उसका फॉर्मूला हमें क्या मिला था? सर उसका फॉर्मूला 4r1/3 पाई, कुछ याद आ रहा है प्लेट का? हाँ sir. Yes, sir. 4r/3 पाई। तो ये देखो ये आंसर आएगा। कुछ समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ स्टूडेंट्स, ये पूरा Yes, sir. प्लेट Yes, था, sir. ये पूरा बड़ा प्लेट है स्टूडेंट्स, ये हॉलो नहीं है, ये प्लेट है, प्लेट है। हमने प्लेट को कैसे बनाया था? हमने एक रिंग लिया था और उसका फिर सेंटर ऑफ मास लिया था, और फिर हम लोग ने इंटीग्रेट किया था विद रिस्पेक्ट टू YCOM। देयर इज नो सेंटर ऑफ मास अलोंग एक्स एक्सिस, तो हमें ये फॉर्मूला मिला था 4r/3 पाई। वैसे ही व्हाट इज द एरिया ऑफ द सेकंड वन? व्हाट इज द एरिया ऑफ द सेकंड वन? सो एरिया ऑफ द सेकंड वन विल बी पाई r2 स्क्वायर बाय 2। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? x2 y2 क्या होंगे सर? ये जो अभी अंदर वाला जो प्लेट है स्टूडेंट्स, जिसको तुम निकालने वाले हो, इसकी एरिया सर वो भी उसका भी मास तो डिस्ट्रीब्यूटेड नीचे की तरफ ही होगा, ऑन द लोअर साइड। लेकिन इसका एक्ससीएम तो होगा ही नहीं, उसका सिर्फ वाईसीएम होगा। उसका वाईसीएम क्या होगा सर? उसका वाईसीएम होगा 4
R2 by 3 pi. क्या ये clear हुआ students? Yes, sir. Everybody, everyone, please. Yes, sir. Yes, sir. अभी हमें क्या चाहिए? Sir, I want the center of mass of the remaining portion. So what's the center of mass of the remaining portion? So the center of mass of the remaining portion is given by what formula? Center of mass of the remaining portion क्या मिलेगा students? What's the formula I'm getting it? Sir, I have total area यानी A1. इसका हम axiom पहले निकालेंगे. वो तो क्या होगा? axiom तो क्या हो जाएगा? 0 मिलेगा. 0. Sir, x component will be 0. 0. तो मुझे YCM के हिसाब से मिलेगा center of mass of the remaining portion, है ना? तो उसका आंसर क्या मिलेगा मुझे? What's the formula? I'll get it over here. Sir, So this is A1 A1 y1 minus A2 y2. upon A1 plus A1. A1 minus A2. फिर इसको सॉल्व Sir, करो और आंसर लिखा इसका भी. यानी इसका जो तुम्हें आंसर मिलेगा वो RCM मिलेगा which is equal to XCUM comma YCUM for remaining portion. For remaining portion का मतलब क्या हुआ? Annular ring. That means 0 comma something. I want to find out that something from here. चलो find out करो अभी. Yes, anyone? Your answer should be 4 upon 3 pi 4 upon 3 pi 4 upon 3 pi. Friends, will pi will play a role? क्या सर? क्या आंसर आएगा बताओ? Anybody? What is the answer? Can I solve it? Students? इसको solve करूँ मैं? हाँ, students? Sir, 4 by 3 pi will be common. तो now, तो क्या आंसर आएगा? ये देखो ना. इसको solve A1 करोगे. 4 by 3 pi A1 R1 minus A2 R2 by A1 minus A2. हाँ, तो तुम्हारा अभी देखो YCM का मतलब क्या हो जाएगा तुम्हारा? YCM अगर मैं लेता हूँ students, so what exactly A1 will be pi R1 square by 2, है ना? तो ये pi Yes, sir. R1 square by 2, and what is Y1? Y1 is equal to what? 4 R1 by 3 pi. Agreed? Yes. हाँ. Minus, okay,
यहाँ पे तुम्हारा A2 कितना है? हाउ मच इज A2? पाई R2 square by 2. And how much is Y2? 4 R2 by 3 pi divided by E1 minus E2. E1 minus E2 will be pi R1 square by 2 minus pi R2 square by 2. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? Yes. अभी ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, अगर तुम देखोगे, अगर तुमने ये दोनों को मल्टीप्लिकेशन में देखा स्टूडेंट्स, तो तुम देखो क्या होगा सर, ये पाई और ये पाई कैंसिल हो रहा है। हाँ, Yes, sir. ये 2 और 2 जा 4 कैंसिल हो रहा है। एग्रीड? Yes. तो न्यूमरेटर क्या हो रहा है स्टूडेंट्स? न्यूमरेटर क्या हो रहा है? For 2 pi r 2 R R1 cubing. by 3 आया ना? Yes. Yes, sir. तो वैसे यहाँ पे क्या होगा, ये भी पाई कैंसिल होगा, ये 2 2 जा 4, तो यहाँ पे भी 2 R2 क्यूब बाई 3 है ना? यस और नो? Yes. डिनोमिनेटर में कैन आई रिमूव दिस पाई बाई 2 आउटसाइड? तो ये क्या होगा, R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। एग्रीड? Yes. न्यूमरेटर में कैन आई रिमूव 2 बाई 3 आउट? 2 बाई 3 कॉमन निकाल सकता हूँ? Yes, sir. तो 2/3 को अगर मैं कॉमन निकाल दूंगा स्टूडेंट्स, तो ब्रैकेट में क्या आएगा? हाँ स्टूडेंट्स, 4 r1 minus r2 cube. माइनस R2 क्यूब। अभी इसको सॉल्व करो, 4 by तो क्या 3 pi. आएगा? 4/3 पाई आया कि नहीं आया, जो मैंने लिख दिया था? फिर Yes, भी तुम sir. लोग कंफ्यूज हो रहे थे ये कहाँ से आ रहा Sir, है। I sent you the answer. हाँ, लेकिन पहले earlier. गलत बोला था ना। सर बाद में सही सेंड किया था ना। हाँ, अभी देखो a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, और इस a क्यूब माइनस बी क्यूब, a माइनस बी इंटू ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज a माइनस b और a प्लस b। ये कैंसिल हो जाएगा। सो व्हाट इज माय आंसर स्टूडेंट्स? 4 R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर अपॉन 3 पाई R1 प्लस R2। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में कहने से ये फॉर्मूला हम लोग ने लास्ट किया था। यस सर। सेम आंसर है। चेक, अगर तुमने लिखा हुआ स्टूडेंट्स चेक करो उसके साथ में एनुअल रिंग का, टर्न द पेजेस अगर तुमने लिखा होगा तो। राइट नाउ सी दो स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू गेट दिस वन स्टिल, टर्न द पेजेस बिहाइंड एंड क्रॉस चेक इट। रिडिकुलस। ये प्रॉब्लम आना ही नहीं चाहिए था तुम्हें। जैसे तुमने एनुअल रिंग देखा तुरंत तुम्हें ट्यूबलाइट होना था। यार सर ने उस टाइम पे एरिया के बारे में ही बोला था कि इसको हम एरिया से भी अलग मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। और एक बड़ा सेमी सर्कुलर प्लेट है, उसमें से छोटा वाला प्लेट को निकाल रहे हैं हम लोग, सब फ्रैक्शन ऑफ एरिया है। वही अगर मुझे मास में देना है तो मैं मास में भी दे सकता हूँ स्टूडेंट्स। वही देखो मैं एरिया को मास में लिख सकता हूँ, क्यों नहीं? व्हाट एग्जैक्टली सिग्मा इज? सिग्मा इज मास पर यूनिट एरिया। सो व्हाट इज एरिया? मास अपॉन सिग्मा। तो इसको मैं क्या लिखूंगा? मास अपॉन सिग्मा, मास अपॉन सिग्मा, मास अपॉन सिग्मा, मास अपॉन सिग्मा, सिग्मा गेट्स कैंसिल्ड। समझ में आ रहा है? मुझे पूरे सेमी सर्कुलर प्लेट का मास दिया होगा, उसमें से मैंने छोटा मास निकाल दिया, कुछ मास निकाला है तो वो आएगा, तो मैं तो एक m मान लेना, एक m2 लेना, खत्म हो गई बात। और स्टूडेंट्स तुम लोग को जब भी मैंने ये दे दिया ना, a1 दे दिया, x1 y1 दे दिया, a2 दे दिया, x2 y2 दे दिया, और फिर मैंने पूछा फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिमेनिंग। स्टूडेंट्स यहाँ तक फिजिक्स है, ये फिजिक्स नहीं है, ये फिजिक्स नहीं है। अगर ये तुम लोग नहीं क्रैक कर सकते हो, प्लीज ब्लेम योर मैथ्स फॉर इट। डोंट ब्लेम दैट माय फिजिक्स सेंटर ऑफ मास इज टफ or my physics system of particles is tough. Don't blame that. Unnecessarily don't blame physics for that. यही तुम अगर और ये किसी को भी पता चलेगा। E1 मैं बोलूंगा तो वो बता देगा, x1 y1। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा तुम ब्लॉक हो जाओगे, लेकिन दो स्टूडेंट्स थोड़ा सा भी वाइजली और कंसिस्टेंटली रिवाइज करेगा, तुरंत बोलेगा सर ये तो प्लेट है। इसलिए मैंने पहले पूछा, does the center of mass for the plate lies above r/2 या below r/2?
यू इज सेइंग समथिंग डिफरेंट ओनली, टैंजेंट ही जा रही है वो, कभी हंसेगी मेरे पे, कभी टैंजेंट जाएगी, कॉन्सेंट्रेट होगा नहीं उससे, यहाँ पे गलत आंसर दे देगी और फिर बोलेगा नहीं समझ में आया। But still I'm happy with PO, at least she speaks out, I'm very happy for that, at least she is learning it और उसको पता चला कि कहाँ पे गलत जा रही है वो। I don't know about it whether she's taking it in a positive manner or she's taking it in a different manner, and I have no problems if she's taking it in a different manner. लेकिन बाकी जो स्टूडेंट्स रिप्लाई भी नहीं करते हैं उनके लिए तो बहुत बुरी बात है। जो रिप्लाई नहीं करते, जो जिप्ड है, जो चुप बैठते हैं, उनको तो कुछ पता नहीं चल रहा व्हाट इज द हेड ऑफ द चैप्टर, व्हाट इज द टेल ऑफ द चैप्टर। और जब भी इसकी मेजर टेस्ट होगी तभी सारे रोना शुरू करोगे, जब भी तुम बोलोगे सर मुझे ये फलाना नहीं आता है, मुझे ठिकना नहीं आता है, मुझे ये नहीं पता चलता है, मुझे वो नहीं पता चलता। स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली, अब भी पूछो, डजंट मैटर, लेकिन जो सिखाया हुआ है ना स्टूडेंट्स, उसमें गलतियां मत करो। Why did I slightly become coming slightly heavily onto Q? क्योंकि सिखाया था ना, सेमी सर्कुलर प्लेट है, उसका सेंटर ऑफ मास मैंने ऑप्शन दिया इक्वल टू r/2, ग्रेटर देन r/2, लेस देन r, उसको आंसर पता था स्टूडेंट्स, लेकिन वो क्या घाय करती है ना पीयू, तुम घाय करते हो ना, तुरंत आंसर दे देते हो, सॉरी सर। सोचते नहीं हो तुम देने के टाइम पे, थोड़ा सा भी अगर तुम ध्यान से सोचो ना, instantly you'll be giving a correct answer pure. The only problem in you is you are in a haste, because of haste you commit mistakes, that's your problem, बाकी problem नहीं है। अगर तुम किसी चीज को ध्यान से सुनो ना, you can crack that question easy. Is that clear pio? यस सर। तुमने डीपी क्या चेंज कर दिया यार, थोड़ा सा पूरा ऑफसेट हो गया यार, ये डीपी तुम्हारे लिए लकी। Neha was messaging that sir is misunderstanding our names, so I said it's better that Yeah, we. of course I was misunderstanding, तब मुझे लगता है कि So नहीं that's why we changed our original DPs. okay good fine। लेकिन स्टूडेंट्स अब ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स हम लोगों को, अभी तुम्हारा, अभी सपोज ऐसा क्वेश्चन आ तो तुम्हारे पे डिपेंड है तुम्हें कैसे करना है। ओके अभी मैं इसको इरेज कर दूं स्टूडेंट, सेमी सर्कुलर प्लेट वाला इरेज कर दूं, Yes sir. इरेज कर दूं स्टूडेंट्स। Yes sir. Yes, sir. नाउ कैन यू गेट मी द आंसर फॉर दिस, अभी देखो ये इजी हो जाएगा। मैंने पूरा इरेज कर दिया, रखा क्या, मैंने जानबूझ के जो चाहिए वो ही रखा है बस। अभी तो पता चल गया हिंट कैसे सॉल्व करना है, समझ में आ रहा है। A1 क्या लोगे, A2 क्या लोगे, अभी तुम्हारी मर्जी, अभी तुम सोचो और मुझे फाइनल आंसर लाके दो। I want the coordinates axiom and yxiom for the remaining portion. Please get it fast now. नेहा तुम्हें पहले ही सही आंसर दे देना चाहिए था, तुमने पहले गलत दे दिया ना तो Yes, sir. Actually, I didn't consider the denominator in that case. A2 minus A1. थोड़ा ध्यान से कर एक सही आंसर दोगे ना तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, यू नो दैट। तुम्हें आता है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सही आंसर देने से तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ऑलवेज ट्राई टू गो फॉर इट, और थोड़ा सा 2 सेकंड ज्यादा लो ना, व्हाई नॉट। उतने देर में कोई और बोल देगा ना, तो उसके चक्कर में भी से फास्ट। नहीं सर,
गलतियां से ही होता है स्टूडेंट्स. I was recently watching the web series Rocket Boys, the new web series which is out, that is based on to Homi Bhabha. Then as Vikram, we consider Sarabhai and Abdul Kalam, the first rocket launching and the first atomic reactor built up in India during Chinese attack, which is beautifully set up, however, by Indian physicists. The way they were thinking, the way they were doing it, and in what problems they had done all these inventions, and what problems they were facing it throughout. Every time they had failed, बहुत टाइम तो उन्होंने फेलियर देखा. फेलियर के बाद में उन्होंने शट डाउन भी कर दिया. अपना जो एम था, अपना जो विजन था, अपना जो लाइकिंग था, उसको बंद कर दिया. अम्बालाल साराभाई का लाइकिंग था रॉकेट लॉन्चिंग, और एपीजी का कलाम आजाद का भी रॉकेट लॉन्चिंग का, लेकिन उसे बंद कर दिया अम्बालाल साराभाई ने, विक्रम साराभाई ने बंद कर दिया. लेकिन फिर वो अब्दुल कलाम साथ में आया, एंड देन फर्दर अहेड बोथ ऑफ देम स्टार्टेड एंड दे लॉन्च द फर्स्ट रॉकेट. पहले रॉकेट को लॉन्च करने के लिए विक्रम साराभाई ने बुलक कार्ट में लेके गया था उसको, और उसको उसको एंगल ऑफ टिल्ट 80 डिग्रीज दिया था. और वो कैसे दिया था? रोप से बांध के. हाइड्रोलिक्स खराब हो गए थे लॉन्चिंग के टाइम पे. सोचो इतना सब उन्होंने किया है, सरेंडर नहीं किया है. वो एटॉमिक रिएक्टर के अंदर भी प्रॉब्लम क्रिएट हो गया था. प्राइम मिनिस्टर नेहरू आके उसको लॉन्च करने वाला, तो उसी टाइम पे तो होमी भाभा पानी के अंदर डाइव, बिकॉज इट वाज अ वाटर रिएक्टर. पानी में जाके रिएक्टर का वहां पे नट बोल्ट को फिक्स करके वापस बाहर आया. फॉर ऑलमोस्ट 1 मिनट से ज्यादा पानी में रहा था वो. दीज ऑल थिंग्स आर देयर. फेलियर्स होते हैं. तुम्हें भी फील होगा क्या यार इतना टफ है, कैसे करे, कभी कभार बंद करके बैठ जाते हो करके. बट नो, यू शुड टेक इट एज अ चैलेंज. यही तो लाइफ है. दीज आर चैलेंजेस इन लाइफ. सब कुछ इजी हो जाएगा तो थिंक इट्स नॉट लाइफ देन स्टूडेंट्स. एवरीथिंग इजी, इट्स नॉट लाइफ. चलो get an answer for this, students. Anyone has got the answer? फ्रेंड्स, ये A1 किसके लिए होगा? कंप्लीट सर्कल के लिए होगा, है ना? हाँ सर. और ये कट सर्कल के लिए होगा. इसका एरिया क्या होगा? पाई ए स्क्वायर होगा, हाँ या ना? जी. Yes, sir. इसका रेडियस कितना होगा? a/2 है. Yes, sir. Yes, sir. क्या हो जाएगा? पाई a/2 द होल स्क्वायर, है ना? Yes, sir. Yes, sir. पहले सर्किल के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? यानी अगर मैं ये एक्सिस ऑफ, देखो मैंने एक्सिस ऑफ सिमेट्री बता दिया था, मुझे बताना नहीं चाहिए था. कोई यहाँ पे लेता टेंजेंट एक्सिस ऑफ सिमेट्री तो भी आंसर होता स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स, ये अगर मैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री लेता हूँ तो देखो ये एक है. कोई स्टूडेंट्स यहाँ पे एक एक्सिस और इसको ओरिजिन ले लेता, तो मुझे बताओ ये जो पूरा सर्कल है उसका उसका क्या होता है? डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास फॉर दिस एंटायर सर्कल यहाँ पे होता, तो वो क्या होता? a,0. इसका क्या होता? दिस इज स्टिल एडेड ओवर हियर. आई गेटिंग इट? a plus a/2, बट दैट इज नॉट. तुम ये वाला लो ना, इसलिए मैंने यहाँ पे ले लिया ये 0,0. स्टूडेंट्स, टू मेक इट मोर इजी, ये तुम्हारे कोऑर्डिनेट्स होंगे. x1 y1 पहले केस में क्या होगा? ये होगा पॉइंट. x2 y2 क्या होगा? x2 y2 ये पॉइंट है. यानी व्हाट एग्जैक्टली आई विल कंसीडर a/2, 0. नाउ कैन यू गेट एन आंसर स्टूडेंट्स? अभी मेरा कोऑर्डिनेट्स में नहीं, शायद बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे ब्लॉक होते रहेंगे कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से.
और मैंने x एक्सिस y एक्सिस दे दिया था, तो ये 0,0 आता है और ये a/2, 0. नाउ सॉल्व एंड गेट द आंसर स्टूडेंट्स. इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes, everybody's getting the answer. Neha has got the answer. But Neha, are you correct? Anya, Yes, sir. cross check the sign. Just can you tell me what exactly XUM will be? Please pay attention to what exactly XUM will be. It's A1 x1 minus A2 x2 Pi upon A1 cube minus upon A2. 4. Now what is A1? Pi A square. X1 is 0 minus A2 x2. And can I say my XUM will be equal to how much I'll consider will be? XUM will be ये first part तो 0 हो जाएगा, है ना? Minus A2 x2. A2 क्या है? Pi A/2 the whole Pi square. a/2 the whole square into a/2. Agreed, students? Yes, sir. 4 into A/2 upon what exactly get it? A1 minus A2. यानी pi A square minus pi A/2 the whole square. Now solving this, ये नेगेटिव में आएगा स्टूडेंट्स. यहाँ पे क्या होगा? pi A cube by 8 हो जाएगा. Divided by ये क्या होगा? So what is this? This is pi A square 3 pi minus. square by 4. Students, what is 1 minus 1/4? Sir. 1 minus 1/4 कितना होता है? 3/4 होता है कि नहीं होता है? Yes, sir. तो 3/4. तो इसको मैं सॉल्व करूंगा तो माइनस पाई A cube by 8 इंटू 4/3 pi A square. अभी देखो कैंसिलेशन में क्या होगा? पाई कैंसिल हो गया, 4 2 8 कैंसिल हो गया, माइनस साइन आ गया, A square A से कैंसिल हो गया, A/6 आया. Yes, sir. एंड व्हाट इज YCM स्टूडेंट्स? YCM क्या हो जाएगा? YCM तो क्या है सर? ये Y1 भी 0 है, 0. Y2 भी 0 है, तो YCM तो 0 आएगा. व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स? माइनस A/6, 0. नया अभी भी गलती कर दी ना साइन की वजह से. Yes, sir. So मैंने सॉल्व ठीक से किया था, बट वो रफ में किया था ना, तो माइनस हाँ, तो वही होता है एग्जाम्स में. ऑप्शंस देंगे A/6, 0 माइनस A/6, 0 6/A, 0 माइनस 6/A, 0. तभी Sir, जाके स्टूडेंट कंफ्यूज, और फिर तुरंत घाय में तुम्हें सामने और तुम्हारा आंसर दिख जाता है A/6, 0, उसको मार्क करके घर पे आ गए. sir. एग्जाम्स में गलतियां होती है क्योंकि वहां पे तुम घाई करोगे, वहां पे तुम्हें आंसर सामने जानबूझ को आंसर बताया जाएगा.
तुम्हें उल्लू बना, तुम्हें ट्रैप में एक ट्रैप होता है, वो सामने दिखाई देगा कि ट्रैप है, लेकिन यू हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस व्हाइल सॉल्विंग इट। और अभी भी बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ तक फिजिक्स है, A1 X1 Y1 A2 X2 Y2, बस ये फिजिक्स है। ये अगर नहीं आता है, blame maths for it. Can I erase this now, students? इसको erase कर दूँ मैं? हाँ students, can I erase it? सर हाँ बोलो। सर मैंने आपको एक आंसर भेजा था, उसमें अगर वैल्यू ज्यादा तो यही आंसर है। आंसर भेजा था तुमने, कहाँ भेजा? सर नहीं मतलब भेजा, पहले भेजा था पहले भेजा। सर, वो 4x1 - x2/3 वाला। हाँ 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 हाँ। अच्छा अच्छा, वो इसका आंसर था। तुम पहले इसका, अच्छा सर तुम सर्कल को ड्रॉ सॉल्व कर रहे थे पहले। हाँ सर, ये फर्स्ट डायग्राम था ना इसके लिए। फाइन फाइन फाइन, प्रॉपर प्रॉपर शो। Is it clear, students? Farhan, are you getting it? Anaita, are you there, Anaita? You're not replying at all. Yes, Hope sir. you are there. Yes, sir, I'm there. Anaita, you are an interactive student. I don't know what is happening. You're not replying at all. नहीं समझ में आता तो पूछना, Anaita, okay? नहीं सर, सब कुछ आ रहा है. Okay, fine. The rest of the students, Arif, Arshan, Aryan, Ayushman, Oj, Piyush, Pranay, Pratham, Yes, sir. Rushika. Yes, sir. Getting it, Rushika? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Taksh, what about you, Taksh? Getting it? Okay. Vruddhi, निखिल कौन है? ये निखिल क्या है? निखिल कभी आया है भाई? इरेज कर दूं स्टूडेंट्स में अभी इसको? हाँ स्टूडेंट्स, इरेज कर दूं मैं इसको? 1 minute, Yes, sir. sir. 1 minute. Yoshi saying 1 minute. पीयूष, किसका फोटो है? आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर का है? नहीं सर, वो कैरेक्टर का है सर, थॉर. ओके। Sir, वो 3/4 है by Sir 3 कैसे आया? अरे I became blank for a second. Sir, so your mic is off. हाँ, क्या बोल रहे थे कोई? हाँ, क्या बोल रहे थे? What are you saying? Sir, that 3, how it came? See, after one, 2 comes in the. You, what comes after 1? Oh, And after 2, what comes? 3. Sir, Okay. And you, if in case if I give you one complete pizza, if I give you one complete अच्छा pizza, हाँ हाँ understood. Sorry. out of one complete pizza, 3/4. 1/4 Okay. Neha eats it up. Neha हाँ eats 1/4. So how much is left with you? हाँ sir 3/4. Thank you. Okay, my God. Now you understood how do you get 3? After what comes 1, 2 comes. After 2, what comes? 3 comes. And the total 4 was same throughout. Okay, students, the next question.
Students, now if in case if I happen to give you a square block, students, okay, the same way what I told you earlier, students, if in case if I give you a square lamina, students, side is 2a, okay, it's a square lamina, side is 2a, okay, mass is capital M, okay, it's a uniform mass. Okay, and side is 2a, students. My question to you is, students, if in case if I remove one part, okay, one part, exact one part, because these are all congruent sides. If I cut this part, students, then I'm going to get this part. Students, my question to you is, can you find out the center of mass of this portion? Yes, students. Is the question clear, students? Yes, sir. Get me the answer now. Come on, the most intelligent student of the class will be able to answer. The strength was around 28 students. 7 students have called off from the lecture. And these are the most sincere students. Farhan, Neha, Anaita, Arif, Arshan, Aishman, Izar, Kushal, Yoj, Fiu, Piyush, Pranay, Pratham, Rishabh, Rishika, Shubh, Taksh, Valentino, Veer, and Vritti. Hey, answer there. Neha. Sir, I have offline school now. Huh? Sir, I have offline school now. You have? What you said? Sir, offline school, Which school? RTPS. Where it is? So these Sir, days you leave 10 minutes pehle only in every lecture. अभी शुरू होगा क्या तुम्हारा? हाँ हाँ, सर. सबका शुरू हो रहा है स्टूडेंट्स स्कूल? No, sir. Sir, we are in TP Bhatia. तो टीपी भाटिया. तो ये एक शुरू होते ही खत्म हो गया. हाँ? हमारा शुरू होते ही खत्म हो गया. अच्छा, ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देना स्टूडेंट्स. चलो एक फटाक से आंसर दे दो फिर चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं. Can you find the center of mass? अगर मैं सपोज एरिया के हिसाब से जाता हूँ तो स्टूडेंट्स कैन यू टेल मी व्हाट इज द एरिया ऑफ द एंटायर? अगर मैं एरिया पूरा लेता हूँ स्टूडेंट्स, ये पूरा एरिया लेता हूँ, इसको मैं A1 लेता हूँ. देखो ब्लैक पोर्शन है. व्हाट इज एरिया A1? सो एरिया A1 इट्स अ स्क्वायर, तो साइड स्क्वायर कहने से 4A स्क्वायर हो जाएगा. Yes, sir. Yes, sir. इसके कोऑर्डिनेट्स में x1 y1 लूंगा, मैं रेडिंग से दिखा रहा हूँ, और ये x1 y1 यानी यहाँ पे आएगा इसका कोऑर्डिनेट्स. एग्रीड? a कॉमा a होगा, आया ना? Yes, sir. उसमें से अभी हमें क्या करना है, कट पार्ट को निकाल देना है, यानी ये पार्ट होगा
तो बताओ इसका एरिया क्या होगा A2, ये पोर्शन का एरिया क्या होगा, कट पार्ट का एरिया, तो बोले सर x2 कट पार्ट का एरिया विल बी A है, तो ये A स्क्वायर हो जाएगा। Yes, sir. उसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे x2/2 क्या हो जाएंगे, तो सर ये एक पॉइंट होगा। तो लुक एट द डिस्टेंस, लुक एट द डिस्टेंस, ये कितना है, ये A और ये कितना है A/2, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, आया ना, Yes, sir. Yes, sir. ओरिजिनली लोगे ना, और ये भी कितना होगा 3A/2, तो कहने से इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 3A/2, 3A/2। क्या ये क्लियर हुआ? Yes, sir. नेहा Yes. क्लियर हुआ? Yes, sir. Okay, now can you give me the value of XUM and YCUM? Yes. What is XUM? A1 x1 minus A2 x2 upon A1 minus A2. अभी सॉल्व करोगे? YCUM A1 y1 minus A2 y2 upon A1 minus A2. Can you tell me what are the answers for this? (13A/12). Valentino, 13A/12. अगर मैं इसको सॉल्व करूँ स्टूडेंट्स, वही क्या होगा 4A स्क्वायर, x1 कितना है इंटू A minus A2 will be A square, x2 is what 3A/2 upon A1 minus A2 4A square minus A square, स्टूडेंट्स ये हो जाएगा 4A क्यूब, ये भी होगा, तो कह रहा है रिमूव A क्यूब आउटसाइड, so 4 minus 3/2 upon 3A square, ये कैंसिल हो जाएगा, that is equal to how much, 4 2s are 8, students 4 2s are 8, 8 minus 3 5, 5/6 ये होगा XUM, और YCUM भी सेम वैल्यूज है, वो भी 5A/6 आएगा। स्टूडेंट्स गेटिंग इट? Yes, sir. Yes, sir. दोनों सेम होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो ना, अभी देखो A1 मेरा ये आएगा 4A स्क्वायर, व्हाट इज Y1, A है, A2 A स्क्वायर, व्हाट इज Y2, वही वैल्यू है, तो मेरा XUM और YCUM का आंसर सेम ही आएगा। Valentino, you did a mistake in your maths. Valentino, you tried it out, but I'm happy that you tried. Doesn't matter. इसलिए बोला थोड़ा सा अगर तुम्हें ये मिल जाता ना स्टूडेंट्स, अभी मैथ्स के ऊपर तुम गड़बड़ मत करो ना यार, ये तुम अगर सही नहीं करोगे तो तुम्हें लगता है तुम्हें फिजिक्स नहीं आता है, और बेचारा मेरा फिजिक्स इसमें हार्म हो जाता है, और उसमें फिर पीओ हंसती है, फिजिक्स गलत जाता है कभी, वो बोलती है कि फिजिक्स टफ है। Is it clear, students? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. नेक्स्ट लेक्चर विल बी कंटिन्यूइंग फर्दर, लेकिन मुझे ये वाला डायग्राम बताना वापस, ओके? नेक्स्ट लेक्चर में जब हम शुरू करेंगे, ओके? Yes, sir. चलो बाय, टेक केयर। Thank Thank you, you, sir. sir. Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir.